বিজয়ৰ সংকল্প লৈ সকলোৱে এবাৰ বজ্ৰকণ্ঠে ক'ব, ভাৰত মাতা কি, ভাৰত মাতা কি। মোৰ বুট, মোৰ বুট। আকৌ এবাৰ, আকৌ এবাৰ, আকৌ এবাৰ এনডিএ চৰকাৰ, আকৌ এবাৰ। বহুত বহুত ধন্যবাদ। আমাৰ মাজত উপস্থিত হোৱা অসম সুহৃদ, ভাৰতৰ খনিকৰ, বিশ্বৰ আদৰৰ নেতা, আমাৰ দেশৰ প্ৰধান সেৱক শ্ৰদ্ধেয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আজিৰে বুথ বিজয় সংকল্প সভালৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ 65 লাখ কাৰ্যকৰ্তাৰ হৈ আদৰেৰে উষ্ম আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো। মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, আপোনাৰ গৰিমাময় উপস্থিতিয়ে আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অসম প্ৰদেশক এক নতুন শক্তি, এক নতুন সামৰ্থ্য আৰু এক প্ৰেৰণাৰ অনাবিল আমাক উৎস প্ৰদান কৰিছে। শ্ৰদ্ধেয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, আপোনাৰ নেতৃত্বত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত বিকশিত ভাৰতৰ বাবে 140 কোটি ভাৰতীয়ই যি সপোন দেখিছে, এই সপোনক সাৰ্থক কৰাৰ বাবে নিশ্চিতভাৱে অসমে কেতিয়াও পিছত নাথাকে। এ ফৰ আসাম আপুনিয়ে কৈছিল মহোদয়, অসমে পূৰ্বত যিবিলাক তিক্ততা পাইছিল পূৰ্বৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত, সেই তিক্ততা এতিয়া অসমবাসীৰ বাবে অতীত হৈছে, পাষ্ট হৈছে। আপুনি দায়িত্ব লোৱাৰে পৰা 2014 চনৰ পৰা অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল ভাৰতবৰ্ষৰ বিকাশৰ মানচিত্ৰত শক্তিশালী স্থান পাবলৈ সক্ষম হৈছে। আপোনাৰ বদন্যতাৰ বাবেই যোৱা 10 বছৰত অসমে 5.5 লাখ কোটি টকা আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণৰ কাৰণে পাবলৈ সক্ষম হৈছে। प्रधानमंत्री जी, मैं आपको आसाम के भारतीय जनता पार्टी के यहाँ उपस्थित 31,486 बूथ अध्यक्ष, हमारे 7,200 शक्ति केंद्र के आह्वायक, मंडल से आए हुए हमारे पदाधिकारीगण, जिला से आए हुए हमारे पदाधिकारीगण, हमारे प्रदेश के पदाधिकारीगण और राष्ट्रीय पदाधिकारीगण यहाँ पर आज आपको सुनने के लिए, आपका मार्गदर्शन के लिए आतुर है। प्रधानमंत्री जी, मैं आपके बीच मेरा समय ज्यादा नहीं लूंगा। हमारे बीच में आसाम के इतिहास का सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी यहाँ उपस्थित है, जिनके नेतृत्व में आज पूरा आसाम चतुर्दिक विकास के ओर आगे बढ़ा है। आपका आशीर्वाद, आपका मार्गदर्शन से प्रधानमंत्री जी, मैं आसाम के कर्मदक्ष मुख्यमंत्री, भविष्यदर्शी मुख्यमंत्री और आसाम के नए आसाम के जो खनिकर है, ऐसे हमारे प्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी को भी इस सभा में स्वागत करता हूं।
सर्बानंद सोनोवाल जी, जिनके बारे में हम सबको मालूम है, हम सबका नेता है, हम सबका मार्गदर्शक है। यहाँ उपस्थित सभी हमारे केंद्रीय नेतृत्व, बैजयंत पांडा जी, हरीश द्विवेदी जी, डॉक्टर संबित पात्रा जी, और यहाँ सुने पे सुहागा है प्रधानमंत्री जी, आज हमको बीजेपी को कार्यकर्ताओं को उत्साह बढ़ने के लिए हमारे बीच हमारे मित्र दल के असम गण परिषद के अध्यक्ष अतुल बोरा जी भी आज यहाँ उपस्थित है, और बीपीएफ दल के प्रधान बीटीसी प्रधान हग्रमा महिलारी जी भी यहाँ उपस्थित है। मैं आप दोनों को भी इस सभा में स्वागत करता हूँ। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं इतना ही कहूंगा, आज जो हम संकल्प लेके घर जा रहे हैं, আজি जी संकल्प लय आमी घरলৈ उभति जाम विजयर संकल्प, অসমক সুৰক্ষিত কৰাৰ সংকল্প, অসমক এখন বিকশিত ৰাজ্য হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ সংকল্প, প্ৰতিটো বুথত জিকাৰ সংকল্প, মোৰ বুথ সকলোতকৈ মজবুত সংকল্প। আকৌ এবাৰ বিজেপি চৰকাৰ, আকৌ এবাৰ বিজেপিৰ নেতৃত্বত এনডিএ চৰকাৰ অসমত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে সংকল্প লৈ উভতি যাম। অসমৰ সুৰক্ষা বুলি কওঁতে আজি মোৰ এটা কথা মনত পৰিছে যে 2019 চনত পুলৱামাত পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদীৰ বৰ্বৰ আক্ৰমণত 40 জনকৈ ভাৰতীয় সেনা জোৱানে প্ৰাণ বলিদান দিব লগা হৈছিল। মই এই প্ৰাণ বলিদান দিয়া প্ৰতিগৰাকী সেনা জোৱানলৈ এই মঞ্চৰ পৰাই গভীৰ শ্ৰদ্ধা আৰু আমি আমাৰ সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিছো, আৰু সেই কাৰণে আমি দেশৰ সুৰক্ষা আৰু অসমৰ সুৰক্ষাক উন্নয়নৰ লগত আন এটা প্ৰধান আমাৰ বিষয় হিচাপে আগবঢ়াই লৈ গৈছো। গতিকে বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলৰ কুটিল ৰাজনৈতিক চক্ৰান্ত আৰু অসমখনক পুনৰাই তেওঁলোকে যি ধৰণে তুষ্টিকৰণৰ ৰাজনীতি, ভোট বেংকৰ ৰাজনীতিৰে অসমখনত অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহ, প্ৰকৃত মূলৰ ভাৰতীয় মানুহক আকৌ সংখ্যালঘুত পৰিণত কৰাৰ বাবে যে গভীৰ চক্ৰান্ত ৰচিছে, তাৰ বিৰুদ্ধে আমি বিজেপি আৰু এনডিএ শিলৰ ৰেখা হৈ থিয় হৈ থাকিব লাগিব। আৰু আজিৰ দিনটোত সেই সংকল্প আপোনালোক উভতি যাব। মই আকৌ এবাৰ फिर से अपने मार्गदर्शक, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे प्रिय नेता, असम के सुहृद आदरणीय प्रधानमंत्री जी को फिर से इस सभा में स्वागत करते हुए आपका श्रीमुख से कार्यकर्ताओं को जो मार्गदर्शन मिलेगा, ये हमारे आने वाला समय के लिए विजय का जो हमारा संकल्प है, इस संकल्प को और अधिक बल प्रदान करेगा, और अधिक मजबूती प्रदान करेगा। और आपको मैं वचन देना चाहता हूँ, हजारों लाखों कार्यकर्ता को ओर से फिर से एक बार आपके नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी, आसाम में डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी के सामने से नेतृत्व में आसाम में तीसरे बार के लिए भाजपा एनडीए सरकार हम प्रतिष्ठा करेंगे जनता जनार्दन के आशीर्वाद से। यही विषय बोल करके मैं सभी को फिर से एक बार हृदय से इस सभा में फिर से एक बार अभिनंदन स्वागत करते हुए मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।